कोर्स यहाँ आके हमेशा ही अच्छा लगता है। और अभी थोड़े टाइम पहले ही एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेल के गए थे, तो सब बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ ठीक है रांची में हो रहा है, तो सबको पता है कि आधी सपोर्ट तो हमें वहीं से मिलती है, तो काफ़ी एक्साइटेड है टीम यहाँ के क्राउड को लेके। जर्मनी के साथ मैच हुआ था प्रैक्टिस में, इंडिया की हार हो गई थी, तो अगला स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि मैच अच्छा परफॉर्मेंस करोगे? जर्मनी और नेक्स्ट मैच? नहीं, जर्मनी के साथ जो जर्मनी के लिए तो अभी बहुत टाइम है। हमारा नेक्स्ट मैच यूएसए के साथ है और उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। और प्रैक्टिस मैच इसीलिए होता है कि आप अपने आप को देख सको कि आप कहाँ पे और क्या चीज़ आपकी अच्छी है और किस चीज़ पे आपका रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहेगा। बट शायद 3 क्वार्टर तक हम काफ़ी अच्छा खेले जर्मनी के साथ, और ये बोल सकते हम रेडी हैं टूर्नामेंट के लिए। तो ऐसा है कि हम लोग पेरिस ओलंपिक को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और जब भारतीय टीम यहाँ क्वालिफाइंग मैच खेल रही है तो हम लोगों को उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में हमारा जो है झंडा उगाड़ा जाएगा। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम पेरिस ओलंपिक में जाएं और ओलंपिक्स में भी अच्छा करें। पर उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि क्वालिफाई करना, और हमारा पूरा फोकस अपने खुद के ऊपर है कि हम इस टूर्नामेंट में कैसे खेलते हैं एज ए टीम। और काफ़ी अच्छी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और जो जितना हम कर सकते थे हमने अपनी तरफ से उतना हार्ड ट्रेनिंग किया है। जो कोच हमें जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते थे उन्होंने उन चीज़ों पे काम किया। तो अगेन मैं ये बोल सकती हूँ कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टूर्नामेंट। चुनौती इसमें काफ़ी बड़ी होगी, तो आप टूर्नामेंट में चुनौती को कैसे लेती हैं और क्या लगता है कि मतलब कैसा इसमें आप ये करता है डिसीजन करता है? मैंने आपका क्वेश्चन एक बार फिर से बोलूँगी। चुनौती जो है टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग जो चुनौती हो गया, ओलंपिक में जाने की चुनौती हो गई, तो चुनौती को किस रूप में देखते हैं? तो हर एक टीम की हमें अपनी अपनी उसकी रिस्पेक्ट है। और अगर ओलंपिक क्वालिफाई है तो डेफिनेटली चैलेंजिंग तो होगा, आसान तो नहीं होने वाला है। जितनी कोशिश हम करेंगे सामने वाली टीम भी उतना ही करेगी, बट हमें हमारी टीम पे फोकस रहेगा कि इंडिया टीम की क्या स्ट्रेंथ है और हम अपने आप कैसे एज ए टीम खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे सीनियर प्लेयर वंदना कटारिया का नाम होना टीम में कितना प्रभाव करेगा? बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर है तो डेफिनेटली हम उसको मिस करेंगे, बट मैं आपको यही बता सकती हूँ कि उसकी रिप्लेस में भी जो प्लेयर आया है वो भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और डेफिनेटली उसकी हमें टीम को हेल्प मिलेगी। वाइस कैप्टन के रूप में नए कैप्टन मिली हैं आपको, निकी प्रधान झारखंड की हैं, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे? कैप्टनशिप हल्का प्रेशर वाला रहता है। नहीं, कैप्टन का तो मैं भी सोचती थी कि प्रेशर बहुत रहता है, बट इस चीज़ का मैं कोच को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि उनके आने के बाद हमने सीखा है कि कैप्टन वाइस कैप्टन एक नाम है, बट एज ए सीनियर प्लेयर ऑलरेडी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वही निकी काफ़ी टाइम से टीम में है और एक बहुत अच्छी डिफेंडर है, तो वो हमारा काम पहले अपना काम करना है कि हम ग्राउंड में अपनी गेम खेलें। और हमारा अकेले ये नहीं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन, साथ में 4-5 और प्लेयर्स हैं, हम मिलके काम करते हैं, तो इतना कोई प्रेशर वाली बात है नहीं। पहला मैच यूएसए के साथ है, कितना प्रेशर होगा? प्रेशर डेफिनेटली है, पर उस चीज़ का खाली ये नहीं है कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में, शायद एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में भी था और शायद एशियन गेम में भी था, वर्ल्ड कप में, हर एक टूर्नामेंट में होता है। और बीइंग ए प्लेयर मैं यही बोल सकती हूँ वो होना बहुत नॉर्मल है, प्रेशर होना बहुत नॉर्मल है। बट प्रेशर में खेलना वो हमने काफ़ी उस चीज़ पे काम कर रहे हैं और होपफुली आप वो चीज़ सैटरडे को भी देखोगे। हम अपने आप ये अगेन एंड अगेन मैं यही बोल सकती हूँ कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं टूर्नामेंट के लिए। जर्मनी के साथ मैच हुआ, उसमें आपको अपनी कमजोरियाँ पता होगा या उनकी मजबूती पता होगा, क्या लगा उनकी मजबूती कहाँ पे थी और कहाँ पे आप कमजोर थे? सबको पता है कि हाँ जर्मनी एक अच्छी टीम आती है कि वर्ल्ड की टॉप टीम्स में से आती है। और एक टाइम होता था जब शायद हम एक अपने ही हाफ में उनको डिफेंस करते रहते थे, और आज एक टाइम है, अगर आप लोगों ने मैच भी देखा है तो 4-2 का स्कोर है। और शायद 4th क्वार्टर हमने टोटली जो हमारी हॉकी है वो हम नहीं खेले और उस वजह से शायद स्कोर लाइन ये रही। बट उनकी क्या स्ट्रेंथ है वो बताएंगे और आप लोगों को पता होगा। बट हमारी स्ट्रेंथ अटैकिंग हॉकी है और वही अपकमिंग मैच में हमारा फोकस रहेगा। Coach, while the team was in Bangalore, there were some special sessions with Rupinder Pal Singh, drag picking को. A special focus है drag picking पे?
Look, we're always looking to improve, and I think the penalty corner is still an important part of the game. Rupinder is a very experienced, very good drag flicker, and I think if you have the expertise in your own country, yeah, we can only ask, and luckily he made some time for us, and he's had done that in the last year as well, and it's a great help for the junior drag flickers and the junior women's team as well, who's helping then when he's there, but especially for Gujit, for Deepika, Grace in the past. He has the experience. He also knows what it is to be on the top of the circle and knows the pressure of, I have to put this ball in the goal ideally. So I think, it was really helpful to have him there, for the girls to be able to talk to him, how he can give the pointers on the skill as well. So yeah, it was really helpful. So we'll get to see some good drag flick. I hope so. I'll ask Deepika, but she's a very good drag flicker. She's young. I am quite pleased with her performance in the last tournaments on the penalty corner as well. We have multiple threats, and I think I just want her to execute her skill. It's difficult to score penalty corners in women's hockey, so let's see. But if she executes, I'm happy. What special ability does USA have, which you think that need to be taken care of, especially in a strategized way? I think every team here is here for one thing only, and that is qualifying. And I think ranking and where people are and where teams stand doesn't matter anymore, because everyone knows they have an opportunity. So we need to be ready, and I think they'll come out the gates thinking they have a real good opportunity to beat us. So we have to match their intensity. I think knowing the US mentality very well, they'll fight, and they'll fight hard, and they'll compete all the time. And I think if we can meet that competition, then I think we can play a very good match against them. They have speed, they are strong, they have some very skillful players as well, with some speed up front. So we have to defend well, and if we defend well, then I think we'll get some opportunities on our own, and we have also some skills, so let's see. We saw in practice matches that even in practice sessions too, they are very good at long scoops. Will it create problem for you? Look, we know a lot of teams use the high ball right now. I think we train it a lot with our defenders, to have the high ball awareness, know where that ball will come. So it's a matter of understanding the spacing, being aware of it. Let's see, I think we're pretty good in defending it. It has everything to do with being in the moment and understanding what is happening. And I always say, when you're a defender, you're never done. You can never take a break, because we're either attacking and you need to get in a position to transfer the ball. And same, if we have the ball, you need to be sure that when we turn it over, what will happen next. So I think defenders are ready and they know. And yeah, there will be times maybe that we miss trap, but that's part of the game. And then we just have to solve it and make sure that someone else is there. The road to Paris isn't gonna be easy for you guys, right? Is there some kind of pressure playing in home conditions? There is something betting big on the players, we have to qualify. Is it that? Maybe Savi's better to answer that. I think, look, I can answer it, she can answer it. Of course, there's pressure. Like, everyone wants to qualify. I think the Olympics is the biggest tournament there is, apart from the World Cup. So of course there's pressure. Is there more pressure playing at home? Maybe not. For me, it's not so important. I actually think, having played here in Asian Champions Trophy, I really think if the crowd support us like they did in that tournament, that it can be a huge advantage for us. I really think so. इससे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था यहाँ पे, उससे कितना गेम में फायदा मिलेगा सभी तरफ? I figured it was for you because the Hindi was too difficult for me. One more time, please. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने इससे पहले तुरंत खेला है यहाँ पे इसी कंडीशन में, लेकिन उस समय थोड़ा गर्मी था, कितना फायदा मिलेगा आपको उसका? बिल्कुल, जब हम एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे थे तब भी हम क्वालिफाई की ही बात कर रहे थे कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि चैंपियन ट्रॉफी में वो चांस मिल रहा है अपने आप को उस क्राउड के अंदर खेलना, कि कितना सपोर्ट होगा और कितना प्रेशर रहेगा। बट टूर्नामेंट का नाम बिल्कुल चेंज है, और अगर ओलंपिक्स है तो उससे बड़ा कुछ होता नहीं है एक एथलीट के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ की सपोर्ट तो रहेगी, बट हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे खुद पे कंट्रोल रख सकते हैं और कितना खुद पे फोकस कर सकते हैं। समटाइम्स होता है कि क्राउड हमेशा हेल्प करता है, बट कभी अगर सिचुएशन जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं चलता, तो फिर समहाउ कहीं ना कहीं लगता है कि अभी ऑडियंस हमसे और अच्छा खेलने की उम्मीद कर रही है, तो वो भी प्रेशर रहता है। बट टचवुड एशियन चैंपियन ट्रॉफी काफ़ी अच्छा रहा, तो हम होपफुली ओलंपिक क्वालिफाई भी यहाँ पे एक अच्छी हॉकी खेल के सबको चाहेंगे कि वो एंजॉय करें।
सर काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है बनना और डेफिनेटली हम उसको मिस करेंगे, बट आज की हॉकी में यही बोल सकती हूँ कि किसी एक प्लेयर के कारण ये नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा एक कोर ग्रुप रहता है और हमेशा हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं। तो जो प्लेयर साथ में उस किसी भी प्लेयर को अगर इंजरी होती है उसकी रिप्लेसमेंट में आता है तो वो प्लेयर अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता है, और एज ए सीनियर प्लेयर और हमारे वो काम रहेगा कि उस प्लेयर को हम वो सपोर्ट करें, मोटिवेट करें कि वो खुल के, उसका फर्स्ट टाइम बड़ा टूर्नामेंट है तो कि वो खुल के अपनी हॉकी खेले। बट डेफिनेटली हम वरना को मिस करेंगे। निकी प्रधान को कप्तानी का मौका मिला है, कैसे देख रहे हैं आप? वो बहुत अच्छी प्लेयर है और ये हमारे लिए, हमारी टीम में हमने यही सीखा है कि कैप्टन वाइस कैप्टन एक डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हम उस चीज़ में उतना बिजी नहीं रहते हैं। वाइस कैप्टन से पहले वो एक डिफेंडर है, तो हम भी वही चाहेंगे कि वो अपना काम करे, और मैं खुद के बारे में भी यही बोलूँगी कि कैप्टन से पहले मैं गोलकीपर करूँ तो अपना काम अच्छे से करूँ। और ऑलरेडी शायद मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि साथ में हमारे और भी लीडरशिप ग्रुप रहते हैं, हम सब मिल के काम करते हैं तो हेल्प होती है। पूल बी में यूएसए न्यूजीलैंड जैसी टीमें सामने देखकर प्लीज, तो कौन सी टीम को आप कैसा स्ट्रैटेजी है सबके खिलाफ अलग अलग? ऑलरेडी कोच ने बताया या यूएसए की स्ट्रेंथ हमें पता है, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ पता है और हमारी खुद की स्ट्रेंथ हमें पता है, बट मेन फोकस हमारा खुद के ऊपर ही रहेगा कि हमें एज ए टीम कैसे खेलना है और क्या हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम कंटिन्यू रखें। और काफ़ी टाइम से हमारी अटैकिंग हॉकी काफ़ी अच्छी रही है, ओपोनेंट के लिए डिफ़िकल्टी होती है, तो मेन फोकस हमारा खुद पे रहेगा। बट हाँ, फर्स्ट मैच यूएसए के साथ है तो उसके लिए हम ऑलरेडी हमारी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, कल का दिन है, अच्छे से और अपने आप को कल प्रिपेयर करेंगे, उस चीज़ के लिए मीटिंग होगा और फिर नेक्स्ट मैच के लिए जाएंगे। बट अभी हम जस्ट यूएसए पे फोकस है। Coach, yeah, question for you. So, Mir from Indian Express wants to know you. If you can talk about the penalty corner options, since Deep and Gurjul aren't there, and if that's an area of concern, and what Deepika brings to the table. Look, of course, Grace had a good penalty corner. Gudjit has a very good drag flick. I think we have some other options. Udita is developing her threat from the top of the circle. I'm quite pleased with that. Then we have Neha, we have Navneet. They have a very good threat, I think, as well. Salima is a backup option as well, who has a very good slap. And then we have Deepika, who has a very good drag flick, in my opinion. Like I said, I think she's a young player, but her drag flick threat is something that, even coaches in Spain from the other teams that are not here said, look, you still have a good drag flicker. So it's not like that other teams think, oh, we don't have a threat. I think they're very aware that we do. For me, it's not so much about one person and saying, oh, every pressure is now on Deepika. Deepika just needs to flick when she gets the opportunity and execute her skill. And if it goes in, great. And if it's a good ball and the goalkeeper makes a fantastic save, then I can live with that too. So for me, it is all about, can we execute our penalty corner? Will it go in? I hope so, but there's some good penalty corner defenses here too. Also, Ritvik from Hindustan Times wants to know, this is in a tournament you perhaps wanted to beat, looking from a larger perspective of qualifying for Paris through Asian Games. But now that the team is here, is this high pressure tournament? What do you tell the players? Like, it doesn't work to live in the past. I think, they know we've learned from the Asian Games and we didn't qualify, and it doesn't really work for us to keep going back to that. We know that we missed that opportunity, and from that moment on, so from October onwards, we knew that today or in 2 days this tournament is going to start, that we have to be ready for this tournament, and our eyes have been on this tournament from that moment. We played Asian Champions Trophy here. We learned from that. We went to Spain, so we had some more Western-style teams playing against us, which is just a little bit different than we're used to in Asia. And I think that was really good for us. But I think Savi already said it. Look, we're focusing on ourselves. We need to be better. If we play to the best of our ability, I think we have a really good opportunity to qualify. But yeah, there's good teams here, but we don't control them, and we don't control the umpires. We can only control ourselves, and that's what we're going to do, and we're going to fight hard. New Zealand and India are in the same pool, and of late we don't have a very good record against them. Is it a matter of worry for you? Not really. Like I said, yes, Peter is here right now. He arrived last morning. Of course, he was here during Asian Champions Trophy, and
I think in the meantime, I've been in touch with him a lot, but he always sends links. So a lot of the girls have also been meeting with him online. There's 3-4 players working consistently with him. I think when the girls know, they can always reach out to him. I think it's great he's here. For me it's great. I think for the girls it's great. He's meeting with all the players individually before the start of the tournament. He did a meeting yesterday. He knows what pressure is. He knows he wants to help us, and I think it's good we have him, and let's see. One last question. Did the team work focused on any specific areas going into this particular tournament? Hockey-wise, you mean? Yeah. Look, I told the girls as well, we play to our principles, and the principles are our foundation. So if you look at the last couple of months, we've been consistently working on that. And then I look at, our game plan, and I think we're elaborating our game plan. So we're getting better and better to understanding the game and what is needed. If I would pinpoint one thing, it is about our decision making and our awareness. Do we understand what the game needs? In what moment, what the game needs? So playing with that understanding, we need to put a little bit more pressure. We need to understand what the umpire is doing. How can we make sure that we stay with 11 players on the field? That is also important in this tournament. So yeah, we've been working a lot about those things. Thank you. You're welcome. संकल्प